Now, after facing flack from National Child Rights Panel, the Delhi government has issued a new circular on its contentious mentorship program called Desh Ke Mentor. The Delhi government has now asked parents to mandate that an adult must be present during the conversation between the child and the mentor to supervise this conversation. Remember, NCPCR had written to the Delhi government asking it to suspend the flagship program, citing safety concerns for children. The child rights body had raised concerns over the background of the mentor, the lack of police verification, and possibility of the child being exposed to abuse by people masquerading or pretending to be mentors. Let me go across to my colleague Ayushman for more on this. Ayushman, we've seen that after NCPCR has in fact flagged safety concerns, what we've seen is that the Delhi government initially, of course, said that they do their checks as per their protocol on the mentors that they have selected. But now clearly we can see a bit of backtracking by the Delhi government. At least in this particular circular, they are saying that now this mentorship program will actually take place under parental supervision. Yes, there is a tangible shift that is seen in the circular which has been issued, and in that it has been said that any adults will be present, any of the adult family member of the mentee will be present while he's being mentored under the Desh Ke Mentors program. And this presence of mentees, parent or any adult, it comes only after we saw the NCPCR issuing the notice to the Delhi government. Earlier the Delhi government had defended this. We saw Atisi Marlena speaking to us and defending the decision, saying all the verification cannot be done. In fact, we are being told that even the police verification is also something that where the government has said that any adult member or the parent of the family will be present while the mentees are being mentored by the mentors in the Desh Ke Mentor program, which is being run by the Delhi government. Right, Ayushman, thank you so much for joining us with that. I'm also joined on the broadcast by Mr. Priyank Kanungo, Chairman of the National Commission for Protection of Child Rights. Mr. Kanungo, thank you so much for sparing time and speaking to us on this issue on Mirror Now. What I would like to first of all start with, sir, is are you happy with the change that the Delhi government has brought? Your first reaction. They are saying now the conversation between the mentor and the mentee should happen under parental guidance. देखिए, हमको दिल्ली सरकार से एक जवाब मिला है। हम अभी भी उसकी डिटेल्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमको जो प्राइमरीली जो जवाब मिला है उसमें उन्होंने 4 बातें हमको बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो मेंटर होगा उसका कंसर्न पुलिस स्टेशन से करवाया जाएगा। उन्होंने हमको बताया है कि उन्होंने हमको ये भी बताया है कि बच्चे का मोबाइल नंबर मेंटर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने 14 जनवरी को एक सर्कुलर इशू किया है, जिसमें उन्होंने इन 3 बातों के साथ एक चौथी बात ये भी कही है कि मेंटर और मेंटीज किसी भी हालत में फिजिकली नहीं मिलेंगे। जाहिर है उन्होंने एक सर्कुलर और इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पेरेंट्स की मौजूदगी में ही मेंटर और मेंटीज की बात होगी। यही सारी बातें हैं जो लूपहोल थे, जिनको हमने बोला था कि आप ओवरऑल करिए, आप रेटिफिकेशन करिए इन कमियों का। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिल्ली सरकार ने अपनी भूल सुधार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। तो अभी हम डिटेल्स जैसे मिलेगी और अध्ययन कर पाएंगे तो एक रिएक्शन उस पर दे पाएंगे। जी, अभी भी आप मानते हैं कि इस फ्लैगशिप जो स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, इसको अभी भी सस्पेंड किया जा सकता है जब तक आप लोगों की जांच खत्म ना हो? क्योंकि उन्होंने काफी कुछ चीजें ऑल्टर की हैं, मिस्टर कानूनगो. They have actually taken your feedback in consideration and actually made several changes beyond probably what you had asked for. तो अभी भी आप लोग चाहते हैं कि ये सस्पेंड रहे जब तक ना आप लोग अपने विचार दे दें उस पर ऑफिशियली? देखिए, हमने जो बातें दिल्ली सरकार से कही थी, हमको ये जो कल पत्र मिला है, प्राइमरीली प्राइमा फेसी इट सीम्स कि दे हैव कंसीडर्ड ऑल द रिकमेंडेशंस and they have accepted Commission's recommendations to make a secure platform for the children. So बच्चों के हित में जो निर्णय हुआ है उसके बाद हम इसको एग्जामिन करेंगे और उसके मुझे ऐसा लगता है कि
जहां पुलिस वेरिफिकेशन मेंटर्स का होना शुरू हो जाएगा, बच्चों के डिटेल्स शेयर नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम बढ़ाया है। So, Mr. Priyank Kanungo, bottom line, do you think this mentorship program is now safe? Considering these, initially we had reported that there were loopholes, quote unquote loopholes, that had come, that had been flagged by your commission. And now that the Delhi government has said it issued circulars giving these kind of directions, are you satisfied that this mentorship program is now safe for children? Yes, please go ahead. देखिए, हमको रिप्लाई मिला ही है अभी। वी आर एग्जामिनिंग इट, और मुझे लगता है हम शाम तक अपनी इस रिप्लाई को एग्जामिन करने के बाद अपनी फाइंडिंग्स से आपको अवगत करा पाएंगे। बताइए। Mr. Priyank Kanungo, another question. I'm sure you had been asked this a couple of times before as well, while this row actually came to the public domain. ये कहा जाता है कि because of certain political agenda, Aam Aadmi Party themselves have in fact said this in the past, that NCPCR is being misused for political agendas, and that's why this mentorship program, which would have benefited children, especially poor children, is in fact being stalled. Now that the Delhi government run by the Aam Aadmi Party has in fact made these changes, are we looking at a situation once again when sometimes these schemes are in fact being stalled for days unnecessarily, maybe because of underlying political agendas? That's what some critics would say, and even Aam Aadmi Party would say. Your response? देखिए, किसी भी तरीके की बच्चों की सुरक्षा को लेकर जब बात होती है, तो कमीशन का मानना एकदम साफ है कि हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर किसी को, हमारे क्रिटिक को कुछ उस पर कहना है, तो मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा की बात है और कमीशन की रिकमेंडेशन, खासतौर पे पुलिस वेरिफिकेशन को लेके अगर दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया है, तो ये खुद बताता है कि वो गलत थे और वो सुधार पर आ रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर अगर कमीशन कोई बात कह रहा है तो इसको पॉलिटिकलाइज मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बजाय अगर हमको जवाब दिया जाए और जो हम लोग कह रहे हैं उन बातों पर विचार किया जाए, तो हमेशा बच्चों के हित में होगा। अल्टीमेटली मैं दिल्ली के बच्चों को बधाई देना चाहूंगा, वो मीडिया को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों ने जिस तरीके से बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को तवज्जो दी, तो निश्चित रूप से इससे बच्चों को फायदा होगा और दिल्ली के बच्चे डेफिनेटली बधाई के पात्र हैं। जी, कानूनगो जी, आप क्या चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, एज यू आर सेइंग दैट ऑब्वियसली यू आर द हेड ऑफ अ पैनल which is looking into child rights and protection of child rights, how would you like such matters to proceed in the future? Let's talk about how we can improve the system. Would you want, especially Delhi of course is a very important government, but otherwise also in terms of states taking such important decisions, would you want that there's a more consultative process rather than individual decisions being taken and then put out, and then this back and forth goes on about these issues? And in this case, do you think there was no consultative process? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को अपने ईगोज को ताक पर रखना चाहिए जब हम बच्चों की बात करते हैं, जो बच्चों के लिए काम करते हैं। और जाहिर है, जब हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड आता है, ईगो आता है, तो वो गलत निर्णय लेने की तरफ हमको ले जाता है। लेकिन हमेशा कूल एंड काम माइंड के साथ हम बच्चों के लिए काम करते हैं, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तभी एक अच्छा संदेश भी जाता है और बच्चों के लाभ के लिए हम काम कर पाते हैं। So, I mean, what would you like to say to Delhi government now, sir, going forward? What would you like to say to, let's say, a Manish Sisodia or an Atishi on this, if you have a direct message to them, especially with regard to the mentorship program and how that should proceed further? देखिए, उन्होंने आत्मावलोकन किया और आत्मावलोकन करने के बाद सुधार किया, तो ये सुधार किया जाना बच्चों के लिए जरूरी था। ये उन्होंने ठीक किया कि उन्होंने आत्मावलोकन किया।
Right. So Delhi government has reflected on it and made changes. And of course, there should be no egos when it comes to taking decisions on children. The final words there from NCPCR Chief, Mr. Priyank Kanugo. Thank you, sir, so much for joining us on this discussion.